not recommended at all. So don't have your food post 7 p.m. If you want to have something, eat your dinner at 7. And milestone it was the PTDC course. And we are very foolish, sorry for Roma. Between university, I also respect Dubai, but in the former, this is what we Dr. Shivalika Khanna, an international weight loss consultant and nutritionist, a certified nutritionist from ISA USA, as well as I have a PhD in international healthcare from the University of Thames, Paris. And I've done 2 group weight loss programs in Dubai of 100 people and 30 people. That was in 2014 and 15. And for the results of these programs, like one of my contestants, who won the competition, lost 40 kgs in 6 months. So I also received an Asia Arab Excellence Award for my contribution and work in Dubai to the society. So मुझे ये करते हुए at an award ceremony in Dubai, I was chosen for a beauty pageant. They judge your overall कि आपकी क्या personality है. It's not just about your look. What is your experience? What is your caliber, IQ? So जिसके लिए in March 2024 I won the Global International Pageant for India, जो कि बैंकॉक में हुआ था मार्च में. और उसके बाद I got a automatic entry for the global pageant, जिसमें I got enrolled. जो winners थे उनकी entry उसमें हो गई थी. And I got this entry for Dubai. दुबई में ये पेजेंट सितंबर में हुआ था और मैं अपनी कैटेगरी में I won for the crown for, जो ये रेड वाला क्राउन है, for Mrs. Global Milestone Mrs. Global International for Dubai 2024. As well, I was also given the subtitle of Fashion Quotient at Milestone subtitle ceremony, and also announced the #1 fashionista of Milestone pageants. So for this, I was recrowned by Miss Laila Hatwani. She is the founder and president of Women's Business Circle in Dubai. And all these achievements are all covered by SRI News channels in Dubai. So for winning the global pageant, so सारे जो इंडिया के पैन इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स का इवेंट हुआ था by luxury.pr company in Delhi, उमराव में. So वहाँ पे I was invited. I walked the red carpet walk
with my sash for Arzu India, a designer, as well as ये crown जीतने के लिए मुझे ambassador of Libya as well as ambassador of Palestine उन्होंने मुझे honor किया with an award, as well as मेरा जो calendar है उनकी एक calendar बना था for all the international embassies in Delhi. So मेरी April के page के edition पे I got this, my picture is there and it has gone to all the embassies. Now what's the future plan? What's the future after getting both again? What's the future? So my focus is definitely on nutrition, and wherever beauty का आता है for a walk or for a cause, I would love to do that. But during all this phase, I would like to also add in the achievements कि मेरे को I was called at Vietnam City Ho Chi Minh by Mumbai Global Newspaper. वहाँ पे they awarded me. Of course, I gave a seminar on the lifestyle enhancement and how to stabilize the glucose levels. So वहाँ पे मुझे वियतनाम में award मिला है. And then in Punjab, CT group of universities है. They have 17 colleges under them as well as international affiliations. So उन्होंने 25 categories निकाली थी. And I was the only one who was chosen from the nutrition category. And I was honored in the entire Punjab for my achievements in the field of nutrition nationally and internationally. Apart from this, I got another nutritionist award from Fulkari, and Fulkari is a women's organization जो कि they choose one woman who is the MSME Woman of the Year for overall all-round achievements. So getting this crown as well as helping people achieve their weight loss goals. I know weight कम करना easy नहीं है. Everybody wants to, but yes, not on the you have to compromise your good health कि नहीं हमें weight कम करना है. So giving that kind of a diet and helping people achieve their fitness as well as their health goals in a very comfortable manner, that they don't have to give up on the foods they love, that आप बहुत दुखी होके कि हमें अब ये खाना नहीं पड़ेगा. It's not like that. So आपके जो lifestyle में inculcate करके उस तरह की डाइट से जहाँ पे आपकी डिजीजेस एवर्ट हो. सो फॉर दिस आई बीन अवॉर्डेड बाय मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर विच फुलकारी हैज़ ऑल्सो गिवन मी द अवार्ड फॉर MSME वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया. क्या कुछ हो रहा है आपको फ्यूचर में, कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ से इनवाइट आया, कहाँ जाने वाले? Okay, so now for this very month, because I was the keynote speaker at the Kazan Economic Forum in Russia. So वहाँ से the president of different countries had come, and now after hearing all my talks and the presentation, so the president of the Uzbekistan Women's and Girls Leaders and Conference, उन्होंने मुझे उज़्बेकिस्तान में एक बहुत टर्किश लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है May 22 से May 27 तक, उसके लिए मुझे they've called me, and the topic which is given to me is the lifestyle and the behavioral issues for a healthy society, where all the participating countries of Uzbekistan, Turkey, all these countries are coming, and where I'm a keynote speaker. So मैं लोगों के लिए ये message दूंगी that you have to really follow firstly your ancestors. We have to come back to desi ghee. We have to come to all the basic foods जो हमारे ancestors खाते थे. कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमें फैंसी चीज़ें खानी है, कोई किनोआ ही खा के आपकी हेल्थ अच्छी होनी है. आप देसी घी खाएं, सरसों का साग खाएं, मक्की की रोटी खाएं. आपके जो घर का खाना है, जितनी भी घर के फूड्स है, इवन मीठा खाना चाहते हैं, हमारे घर में हम आप तिल गुड़ का लड्डू, क्रेविंग होती है मीठे की, बच्चों को बना के दें. बच्चों को अच्छे प्रोटीन स्टैक्स, जितना भी बच्चों को पैम्पर करने के लिए चिप्स, जितना पैक्ड फूड, जितनी पैक्ड फूड्स को दूर करेंगे, उतनी हम अपने एक जनरेशन्स को एक गिफ्ट देंगे. जितने जो हमारे बच्चे हैं, हर लड़की को 2 out of 5 PCOS है, फैटी लिवर है बॉयज़ को, कभी भी नहीं होता था, जिससे आगे हमारी जनरेशन्स ख़राब हो रही है. आज पेरेंट्स ये पहला स्टेप लेंगे कि नहीं, हमने घर का ही खाना है. जहाँ ऑर्डर भी करना है, इट्स गॉट टू बी सिंपल फूड, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ना हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैवी वो ना हो, उस बहुत इंग्रेडिएंट्स बड़े हैवी ना हो. एंड अपनी ईट आउट भी लिमिट करनी है. ईट मोर एट होम. जितना हुआ, बहुत ज़्यादा बाहर जाना है तो घर से खा के जाएँ. 1 to 2 meals इज़ ओके. बिकॉज आप देखो, जितना हम बाहर खाएंगे उधर हमारा मैदा, उनका
फ्राइड ऑयल वो यूज़ करते हैं उसके कंट्रोल नहीं है. दीज आर द थिंग्स विच आर गिविंग राइज टू ट्यूमर्स, कैंसर्स, स्ट्रोक्स. तो हमें अगर अपने नेशन से वी हैव टू हैव अ डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी. हमारी जो कंट्री है इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ क्रैश. It's one of the biggest like societies having which is going towards diabetes. Every home has diabetic person, and it spoils your whole lifestyle, your life. And of course, I would say one line that your health is your new luxury. So uske liye अपना workout. I would give one small tip. लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, करना नहीं है. जो अपना वर्क प्लेस है, make it into a workout zone. वहीं पे एक स्टेपर रख लो, वहीं पे एक स्टेशनरी साइकिल रख लो. बिकॉज अगर आप जितना बैठोगे उतनी आपकी मसल्स लूज होंगी. इफ़ यू डोंट वर्कआउट यू लूज योर मसल. फ्रॉम देयर आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, यू विल लुक गुड, यू विल फील गुड, एंड यू विल गिव अ बिग इंस्पिरेशन टू योर चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच. I would also like to take this opportunity to thank Mr. Mac Malik, the director and chairperson of Milestone Patrons, who has given me this wonderful platform and opportunity wherein I'm not only invited by different countries. For example, Russia ने एक तो मुझे as a nutritionist बुलाया. I was also given the opportunity to walk on the fashion show on the ramp wherein there was Russia, Moscow, Paris, Milan. It was a fashion week by at the Kazan Forum. So I would also send my very good wishes for the International Milestone Beauty Pageant happening in May in Malaysia for 2025. Thank you very much.